Good afternoon, all of you, and welcome to in-house training program by CBSE. Today's topic is a brief guide to time management. How do we manage the time in the classroom and in the school? How can we manage the time to doing different work? Time management is the important part of the planning and controlling the school system. This is the process of planning and controlling how much time to spend on specific activities. Good time management enables an individual for success. A good time manager complete the work in time. For individual to complete more work in a shorter time period is the successful life of time manager, and he feels very lower stress and lead to career success. Question arises, what is the benefits of time management? The ability to manage your time effectively is important. Good time management leads to improved efficiency and it increases the productivity. It lessens the stress and there is more success in the life. First is stress relief. If we manage the time in life and in the classroom, inside the classroom and inside the school, it is important to relieve the stress. Making and following a task schedule which reduces anxiety. As you check off items on your to-do list, there is listing of important work in a pocket diary. That is today's important work to do is list of. And we do our work in a proper way, in proper time. It is the time management. It avoids and helps the stress less. Avoid feeling stressed out with worry about whether you are getting things done. हम लोग एक वीडियो देखें, वीडियो क्लिप्स में टाइम मैनेजमेंट के कुछ टिप्स दिए गए। Welcome to Time Management for College Students, brought to you by the Eastern Kentucky University Student Success Center. It was so easy in high school, wasn't it? A bell would ring and you knew where to go next and what you were going to do. College is not like that, of course. Suddenly the world expects you to be very adult all at once, and not only takes away the bells, but it doesn't even tell you when to eat, when to do laundry, when to study, take time for self-care. They even let you choose your class schedule. Time management centers on our habits. Think about how many times you mindlessly look at your phone in a day. That's a habit. Habits are hard to break, but they can be easy to create. Start now to build good habits by intentionally making good decisions and managing your own time.
First, look at your time in two categories: the parts of your day you can control and the parts that you cannot control. Things you can't control are when your classes meet. Sure, you got to create your schedule, but face-to-face classes still have a set time. Most students do not have a great deal of control over their work schedule. Parts of your day you can't control, though, are when you eat, when you study, when you socialize, when you sleep. An important recommendation we make is keeping a planner. A planner can help you see your schedule and begin to set your priorities. If you are just starting to use a planner, try writing in a detailed schedule at first. Include all the elements of your day, including class time, when you eat, when you sleep, when you socialize, and so on. First, in your planner, include the parts of your schedule you cannot control. Add your class times and work schedule. Add other events that are scheduled by other people. Then begin to include a healthy sleep schedule and times to eat. Then include your study plan. See the Student Success Center video about effective study plans for more details. But do make sure your study plan is set for early in the day. The brain is not as effective at learning later at night. After adding your study plan times, make sure you include time for yourself. It is important to include self-care time in order for your brain to relax well. Sometimes it's difficult to relax when you feel like you should be studying. Scheduling time for self-care gives your brain permission to relax and not feel guilty about what you think you should be doing. In a world that loves hacks, how about some time-saving hacks? First, make efficient use of your study time. Make sure that your study space is ready for you, that you have your materials, and that you'll be studying in an environment conducive to study. Find a good study space and go there when you study. Never study in your bed. It sends your brain mixed messages. Do we sleep here? Do we study here? And suddenly you can't do either here well. That said, time that you set aside for laundry can do double duty. That's a good time to review flashcards or watch videos that supplement content from your classes. When you're walking from class, you can chat with classmates about what you just discussed in class, or go over some of the terms you just covered. If you aren't walking with classmates, it's a good time to rehearse in your mind key terms and concepts, and try to remember definitions and explanations without looking at your notes. When your brain has to work hard to recall content, it pushes the information to long-term memory a little easier. Limit distractions when you study. There are any number of apps available online that can help you prevent programs on your computer and your phone from being distractions. Most importantly, approach your study time with positivity. Hold yourself accountable and reward yourself when you stick to your schedule. It's easier to stick to a study schedule when you have some reward time scheduled in during the week. Assess how things are going after a few weeks. You will likely have to schedule more time for some classes and perhaps less time for others. Once you hit your stride, stick with it so that you build habits into your schedule. Then you'll find time management comes naturally to you. Now, benefits of time management is the important part for a time manager. It relieves the stress from the mind. It sees the time and we convert the other ones in the extra time. So good time management give us extra time to spend in your daily life. Who can manage the time effectively, enjoy the life, and having more time to spend on hobbies or other personal pursuits. He can enjoy and can manage time with and lead to more opportunities and less time wasted on travel activities. Good time management skills are key qualities
that employers look for. The ability of priorities and schedule work is extremely desirable for any organization. It is also important for a school. Its another benefit is ability to realize goals. Individuals who practice good time management are able to better achieve goals and objectives and do so in a shorter length of time. We apply different tips for effective time management. After considering the benefits of time management, let us add some way to manage time effectively. First is set goals correctly. Second is prioritize wishes. Third is set a time limit to doing work. Take breaks between tasks and organize yourself. Remove the non-essential tasks and plan ahead for extra time. This is the tips which make the time is important for everyone. Set goals are achievable and measurable. Use of a SMART method when setting goals in essence and make sure the goals you set are specific, measurable, attainable, relevant and timely. First is specific. Specific means do the specific work. So it needs the time for doing specific work. So we save the time by managing it. Prioritize wisely. Prioritize tasks based on importance and urgency. For example, look at our daily tasks and determine which are important and urgent. Do these tasks right away. Important but not urgent. Decide when to do these tasks. Urgent but not important. Delegate these tasks if possible. Not urgent, not important, set these aside to do later. तो इस प्रकार प्रायोरिटी फिक्स करना कि कौन से काम हमारे लिए ज्यादा बेहतर है, तो उसके अनुसार टाइम को मैनेज करना। तो इसके लिए एक लिस्ट तैयार करना, पॉकेट में रखना कि कौन से काम आज करने हैं, कौन से काम कल करने हैं, कौन से काम कुछ दिनों के बाद करने से भी कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रायोरिटी के बेसिस पर उसका निर्णय करना। जो इंपॉर्टेंट काम है और अर्जेंट है उसको सबसे पहले प्राथमिकता देनी होगी। जो इंपॉर्टेंट है लेकिन उतने अर्जेंट नहीं है उनके बारे में इसके बाद विचार करना। जो अर्जेंट तो है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है उसके लिए कोशिश करना कि उसको कर तो ले क्योंकि अर्जेंट है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो कुछ समय के बाद भी किया जा सकता है। जो इंपॉर्टेंट नहीं है, अर्जेंट भी नहीं है, उनको टालने की कोशिश कि उस काम को हम लोग आगे के लिए समय मिलेगा फिर करेंगे। सेट अ टाइम लिमिट टू कंप्लीट अ टास्क। किसी भी काम को करने के लिए टाइम लिमिट को फिक्स करना। तो कैसे फिक्स करेंगे, आइए देखते हैं। President Eisenhower said, "I have two kinds of problems, the urgent and the important."
What is important is seldom urgent, and what is urgent is seldom important. This probably rings true for most of us. Think about it like this. Important tasks are ones that drive you forward. They contribute to the longer term objectives, whether at work or personally. Urgent tasks are the ones that need immediate attention. If you're not careful, they can make you reactive and put you into firefighting mode. So, for any task, you need to ask two questions. How important is it really? How urgent is it really? Your answers to these questions will help you plan your work, and we can map them on this matrix. So, first let's look at tasks that are urgent and important. These need immediate attention. They also contribute to longer term goals, so you should get on and do these. These tend to be crises, deadlines, problems. Examples might be a project deadline that is important for the business, an imminent meeting where decisions have an impact on the success of your project, some emails, a job offer, or something that affects your work. Someone is taken seriously ill, or a piece of machinery that breaks on the production line, stopping production. These all need your focus as and when they occur. Next up are tasks that are not urgent but important. These are the things that really drive you forward. But as they're not urgent, it's easy to put them off or get sidetracked and just get caught in the moment doing the urgent. So the best strategy is to book time in the diary for them, to make sure they get the time they deserve. Having this covered is so helpful, and good planning will save you time. These tasks tend to be things like relationships, planning and learning. Examples might be reading a book, planning your week, planning longer term, thinking about what you've been doing and how you can do it better, and more personal things like family time and exercising. It's good to keep in mind that these activities are the ones that are the most meaningful and make the most difference to your success, and probably personal fulfillment. Knowing what is truly important to you and building in time to focus on those things means you can spend your time wisely, and also prevent important things becoming urgent and having to do them last minute. So, next we have tasks that are urgent but not important, and these are often the biggest area where people lose time. These tasks are the ones that are urgent, but they don't contribute to your longer term goals. In fact, they often relate to other people's priorities. So the best strategy here is to push back and delegate them to others. Examples might be someone interrupting with a question, phone calls, most emails, text messages, helping someone with their project, favours. People often spend most of their time in this space because they are helping others and there are issues concerning others' priorities. It seems urgent. But are you being too nice, and is it your urgent? Are you spending more time sorting everyone else out and not progressing your own priorities? You can still help a colleague by delegating to someone from your team. And now for the final section. Not urgent and not important activities are distractions and time wasters, and it's best to ditch them, or at least cut down when you need to get things done. These are checking social media, surfing the web, procrastinating, worrying, making that extra coffee, tidying your desk. Think about what you spend your time doing. Some things in this area are probably done more out of habit than necessity. It's okay to take a break sometimes, but best make sure you know you're doing it and give yourself a 10-minute breather rather than losing time without realising. So, back to the matrix. Get in the habit of asking questions up front. How important is it really? How urgent is it really? And as soon as something comes up, you know where it sits in the matrix and how to best deal with it. So if it's important and urgent, do it now. If it's important but not urgent, put it in the diary. If it's not important but urgent, delegate it. And if it's not important and not urgent, ditch it. Subscribe to our channel for more quick tips and advice on management. So set a time limit to complete a task. This is Don Howe, and the topic for this golden nugget is managing your time. And I'd like to illustrate this by sharing a well-known story. Once upon a time, a professor was teaching a class about time management, and the professor set a 1-gallon glass jar on the table and filled it up with pretty good-sized rocks. He then said to the students, "Is the jar full?" They replied, "Yes, it's full." And then he pulled out a bag of pebbles and he poured them into the jar. As he did, he shook the jar so that the pebbles sifted down through the holes between the rocks. Eventually, the pebbles
reached the top of the jar, and once again he looked at the class and said, "Is the jar full?" The students cautiously answered, "Yes." And then he pulled out a bag of sand and he did the same thing, pouring and shaking until the sand reached the top of the jar. This time, when he looked at the students and said, "Is the jar full?" they said, "No." He smiled. He pulled out a pitcher of water. He poured it into the jar until the water reached the top of the jar. And then he looked at the students and he said, "What was the point of this illustration?" And one young man jumped up and said, "I know. No matter how full your schedule is, if you try hard enough, you can always fit some more things into it." The professor shook his head and replied, "That's not the point I was trying to illustrate. The point I was trying to illustrate is that if you don't put the big rocks in first, you'll never get them all in. If you fill your jar first with pebbles or sand or water, then there won't be any room for the rocks. If you allow the small things to take up all of your time, then you won't be able to accomplish the bigger things. Figure out what your highest priorities are and do your best to work first on those things that move you towards your goals. Once your goal-related activities are scheduled, then you can fill the rest of your schedule with all those other activities that are less important but still need to be done." Of course, you know this already, but the illustration of the rocks in the jar is a good reminder to schedule your highest priorities first. I imagine that you do this because that's what winners do, and you are a winner, and given enough time, you will win. Yes, you are a winner. Thank you for listening to this Golden Nugget by Don Howe. Set a time limit to complete a task. समय के अनुसार काम को प्रमुखता देना और समय पर समाप्त करना. Setting time constants for completing tasks help you be more focused and efficient. Making a small extra effort to decide on how much time you need to allot for each task can also help you recognize potential problems before they arise. And that way you can make plan for dealing with them. For example, assume you knew to write up 5 reviews in time for a meeting. However, you realize that you will only be able to get 4 of them done in the time and remaining before the meeting. If you become aware of this fact well in advance, and you may be able to easily delegate writing up one of the review of someone else. However, if you hadn't bothered to do a time check on your task beforehand, you might have ended up not realizing your time problem until just an hour before the meeting. At that point, it might be considerably more difficult to find someone to delegate one of the review to, and more difficult for them to fit the task into their day too. तो समय के अनुसार
काम को समाप्त करने की कला टाइम मैनेजमेंट है कि सभी काम समय के अनुसार ही समाप्त हो। यदि उसमें हम कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएं तो वह काम त्वरित गति से कुछ शीघ्र ही समाप्त हो सकता है, और जो एक्स्ट्रा टाइम बचेंगे उनसे हम कुछ अलग सोचेंगे, अलग काम करने के विषय में बात करेंगे और फिर उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो पहले कामों की प्राथमिकता को तय करने की बात कि उसके गुणवत्ता को जाने कि कौन कितना इंपॉर्टेंट काम है, उसके आधार पर समय को विभाजित करें और फिर समय पर उनको समाप्त करने के लिए प्रयास करें। यदि यह समय पर समाप्त होता है तो हमें अगले काम के लिए कुछ एक्स्ट्रा समय भी मिल जाएगा, तो जो डिफिकल्ट वर्क होगा उसको हम लोग कर पाएंगे समय पर। टेक अ ब्रेक बिटवीन टास्क, कामों को करने के बीच में कुछ ब्रेक लेना। जैसे अभी विद्यालय में 7 कालांश की पढ़ाई होती है, तो बीच में हम लोग क्या करते हैं, अल्पाहार के लिए टिफिन होती है, फिर उसमें अल्पाहार लेते हैं, फिर एनर्जेटिक फील करते हैं, रिचार्ज हो जाते हैं, फिर क्लास लेते हैं। इसलिए ब्रेक होना बहुत जरूरी है। यदि ब्रेक नहीं हो तो कक्षा में जो अध्यापन का कार्य संपादन करना है वो समय पर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि मन क्या रहेगा, बोझिल रहेगा, स्ट्रेस फ्री नहीं रहेगा। इसलिए टेक अ ब्रेक बिटवीन टास्क। When doing a lot of tasks without a break, it is harder to stay focused and motivated. Allow some downtime between tasks to clear your head and refresh yourself. Consider grabbing a brief nap and going for a short walk or meditation. घूमने के लिए कुछ देर के लिए जाना या कुछ मेडिटेशन के उपाय, जैसे एक कक्षा के बाद जब दूसरी कक्षा शुरू होती है उस बीच में आप क्या करते हैं, उस गैप में बच्चे क्या करते हैं। तो जैसे ही आप कक्ष में दूसरी कक्षा को लेने के लिए पहुंचते हैं, बच्चे को शांत करने के लिए आप कौन से तरीके अपनाते हैं। बहुत तरह की एक्टिविटीज आप करवाते होंगे, बहुत तरह के योगा जो चंद सेकंड के लिए, 30 सेकंड 40 सेकंड के लिए वो करवाते हैं। फिर कक्षा में एकाग्रता आती है तो अध्यापन का कार्य अधिक सरल हो जाता है, और समय पर जब हम पहुंचते हैं कक्ष में तो सभी कार्य नियमित रूप से होते चले जाते हैं। यदि किसी कार्य को हम कल के लिए छोड़ दें तो आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों हो जाएगा, तो काम पर क्या हो जाएगा, बोझिल हो जाएगा, बोझ बढ़ता जाएगा वर्कलोड, और फिर लगेगा कि आप स्किप करें। खास करके देखा गया है कि गणित शिक्षण का कार्य बच्चे को क्यों हार्ड लगता है, क्योंकि धीरे धीरे उसके माथे पर लोड बढ़ता जाता है, पेंडिंग वर्क समय पर नहीं किए, बच्चे के माथे में वो लोड बढ़ता गया। लास्ट में बच्चे के लिए मैथमेटिक्स बहुत कठिन सब विषय के रूप में उभर कर आता है कि उसके लिए मैथ बहुत हार्ड है। क्यों हार्ड है, क्योंकि उन्होंने टाइम मैनेज नहीं किया, समय पर उसको पूरा नहीं किया, इसलिए ऐसा होता है। बहुत से बच्चे कक्ष में रहते हैं, समय पर सोते नहीं है, सेल फोन पर समय बिताते हैं और कक्ष में नींद मारते हैं, झपकियां लेते हैं। आप लोग ऐसा देखते होंगे। तो समय पर सभी कामों को पूरा करना, जो नींद के लिए समय है नींद लें, भोजन के समय भोजन करें, अध्यापन के समय अध्यापन करें, अध्ययन के समय अध्ययन करें। तो सभी कार्य को हम लोग समय पर करें। यह जरूरी है कि हम लोग अन्य कार्यों को उस समय नहीं करें जब सीखने की बात होती है। तो जब उसको हम लोग समय पर करते हैं तो यह सफल होता है यह कार्य।
Organize yourself. Utilize your calendar for more long-term time management. यदि लंबे समय तक हम लोग सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी। जैसे हम लोग वार्षिक कार्य योजना बनाते हैं, दैनिक पाठ्य टिप्पणी लिखते हैं कि आज क्या कक्षा कक्ष में करना है, लेसन प्लान बनाते हैं कि आज प्लान वे में कक्षा में अध्यापन का कार्य होगा। वर्ष भर में इन दिवसों में ये कार्य संपादित करने हैं, तो उन दिवसों में उन कार्यों को संपादित करना एक बेहतर टाइम मैनेजमेंट का मुख्य गुण होता है। To utilize your calendar for more long-term time management, write down the deadlines for the project or for tasks that are part of completing the overall project. समूचे कार्य को कितने दिनों में समाप्त करना है, तो विभिन्न पाठ को समाप्त करने के लिए कालांश निर्धारित होते हैं, घंटियां निर्धारित होती है कि इतने कालांश में इतने इस टॉपिक को समाप्त करना, इतने दिनों में समाप्त करना, और समूचे 3 महीने में इतना समाप्त करना है, 6 महीने में इतना कोर्स समाप्त करना है। क्या समाप्त करना ही नहीं, इस दौरान बच्चे सीखे क्या, इसका एनालिसिस भी करना है। वास्तव में सीखे या केवल हम कक्षा कक्ष में क्वारम पूरा करके निकल गए। So organize yourself. Think about which day might be best to this dedicate to a specific task. For example, you might need to plan a meeting to discuss cash flow on a day when you know the company CFO is available or not. तो फाइनेंस हम लोग घर में कहते हैं कि गृह लक्ष्मी है। गृह लक्ष्मी क्या काम करती है? वो फाइनेंस को मैनेज करती है। एक्चुअली वो घर की एचएफओ है, हाउस की फॉर्म जो है करेंसी को फाइनेंस को ऑफिसर है, हाउस फाइनेंस ऑफिसर घर की है, गृह लक्ष्मी से लेकर आती है क्योंकि वो समूचे अर्थतंत्र को नियंत्रित करती है। आपकी हर एक एक्टिविटी घर में नियंत्रित होता है। विद्यालय में जो अर्थतंत्र नियंत्रित होता है विद्यालय की व्यवस्था प्रबंधन के द्वारा। यदि समय पर कार्य को संपादित नहीं किया जाए उसमें बहुत से व्यवधान आएंगे, बहुत सी अड़चने आ जाएगी समय पर संपादित नहीं करने पर। Remove non-essential tasks, activities. It is important to remove excess activities or tasks. Determine what is significant and what deserves your time. Removing non-essential tasks, activities, free up more of your time to be spent on genuine, important things. तो जैसे ही हम लोग प्राथमिकताएं तय करेंगे, कार्य की प्राथमिकताएं तय करेंगे, उसी से काम व्यवस्थित होता चला जाएगा समय के अनुसार। और यदि प्राथमिकताएं तय नहीं करेंगे तो काम दिन प्रतिदिन बोझिल होता चला जाएगा। तो ही वो आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों वाला होगा, क्योंकि सीधा कल करे सो आज कल, आज करे सो। विभिन्न बैंकिंग व्यवस्थाओं में देखा गया है क्या होता है बैंकिंग में कि आज का काम आज ही समाप्त होता है। एक टाइम लिमिट होता है, उस लिमिट के अंदर समाप्त करना होता है, क्योंकि कल यदि पेंडिंग रख देंगे फिर कल का काम करने में असुविधा होगी। इसलिए टाइम मैनेजमेंट हर जगह अपनी अहमियत को रखता है। प्लान अहेड मेक श्योर you start every day with a clear idea
of what you need to do and what needs to get done that day. Consider making it a habit too at the end of each work day. Go ahead and write out your to-do list for the next work day. That's why it is the way you can hit the ground running and next morning. कि कल के काम की रूपरेखा आज ही बनाए। उसके लिए क्या होगा? एक सतत प्रयास डायरी लिखने के लिए अभ्यस्त होना होगा। प्रत्येक दिन डायरी को उलट के जरूर देखना है कि कल का कौन कौन से कार्य हैं, आज ही देख लेना है और उसके लिए प्लानिंग करना। सो प्लान ये है कि कल के काम की रूपरेखा तय करके, प्राथमिकताएं तय करके आज ही तय कर लेना कि क्या काम इंपॉर्टेंट है और उसके आधार पर काम को गति देना। Implications of poor time management. यदि हम लोग समय पर काम को नहीं कर पाए तो वह क्या कहलाएगा? सही समय का वितरण नहीं कहलाएगा, समय प्रबंधन नहीं कहलाएगा। पुअर वर्क फ्लो, तो उससे क्या होगा? जो काम की गति है वो धीमी पड़ेगी और काम त्वरित रूप से संपादित नहीं होगा। The inability to plan ahead and stick to goal means poor efficiency. For example, if there are several important tasks to complete, an effective plan would be to complete related tasks together and sequentially. However, if you don't plan ahead, you could end up having to jump back and forth or backtrack in doing your work. That translates to reduce efficiency and lower productivity. तो हम लोग टाइम मशीन की तरह नहीं कि समय का चक्का उल्टा नहीं घूमता, सीधा आगे की ओर बढ़ता जाता है। समय आपके लिए रुका नहीं रहेगा, समय तो चलता ही जाएगा। तो समय की महत्ता को यदि हम लोग नहीं समझे, समय के अनुसार काम को नहीं किए तो क्या होगा? प्रोडक्टिविटी रेट जो है वो घट जाएगी, उसकी गुणवत्ता घट जाएगी, एफिशिएंसी पर असर होगा, उत्पादकता पर असर होगा। वेस्टेड टाइम, पुअर टाइम मैनेजमेंट रिजल्ट्स इन वेस्टेड टाइम। फॉर एग्जांपल, बाय talking to friend on social media while doing an assignment, you are distracting yourself and wasting time. यदि कोई काम मिला और उस पर केवल परिचर्चा करते रहे, एक दूसरे से परिचर्चा केवल करते रहे, काम को शुरू नहीं किए, तब क्या होगा? इस समय की बर्बादी होगी। जापानी लोगों की यह धारणा है कि भारतीयों में से 70% भारतीय जो है अपना समय बेकार के डिस्कशन में बिताते हैं और उनका प्रतिदिन 3 से 4 घंटा बेकार के डिस्कशन में चला जाता है। यह आकलन था एक जापानी प्रधानमंत्री का जो 1984 में भारत के दौरे पर आए थे। उस समय यहां पर प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी और उनका ये विचार था कि भारतीय लोग जो है चौक चौराहे पर डिस्कशन में अपना समय बर्बाद कर देते हैं और उसी समय जापानी आगे की सोचते हैं, उस समय का सदुपयोग करना वो जानते हैं। किसी पत्रकार ने जब पूछा था इस बात को, जापान कैसे आगे है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कैसे आगे बढ़ गया, विश्व की महाशक्ति, आर्थिक महाशक्ति के रूप में जाना जाने लगा, उन्होंने कहा यही अंतर है कि हम दोबारा उठ खड़े हुए और भारतीय लोग केवल डिस्कशन में समय बिताते हैं। तो समय की महत्ता को पहचानना कि हम लोग टाइम को वेस्ट नहीं करें। आज मतलब आज
और अभी मतलब अभी। नहीं तो क्या होगा, आज करेंगे सो कल करें सो परसों वाली युक्ति के आधार पर काम क्या होगा, पेंडिंग होता चला जाएगा। तो अर्थव्यवस्था भी रुक जाएगी, गति नहीं मिलेगी। इसका असर क्या होगा, गुणवत्ता के साथ साथ उत्पादकता पर भी पड़ेगा। तो आप हम सभी क्या हैं, विद्यालय में एक उत्पादक मशीन भी, एक उत्पाद बनाते हैं। जो भविष्य का उत्पादकता को बढ़ाने वाला होगा वो बच्चे हैं, तो उन्हें तैयार कर रहे हैं अपने कारखाने में कि उन्हें उस योग्य बनाते हैं कि वो अर्थव्यवस्था को संभाल सकें, गति दे सकें। और यदि हम लोग समय को नहीं पहचाने, पढ़ाने के समय में गप में लगा दें, दूसरी बातों में समय को बेजा कर दें, दूसरी चीजों को समझाने में लगा दें, तो जो कार्य आज करने का था लेसन प्लान में आपने जो किया, उसको कक्षा कक्ष में उसको उतारना अक्षर सा, बल्कि कुछ आगे भी पहुंच जाना, नहीं तो उतना तक तो जब पहुंच जाना जितना आपने प्लानिंग किया है। नहीं तो क्या होगा, वेस्टेज ऑफ टाइम। लॉस ऑफ कंट्रोल, नेक्स्ट इज लॉस ऑफ कंट्रोल बाय नॉट नोइंग what the next task is. You suffer from loss of control of your life that can be contribute to high stress level and anxiety. तो जब हम लोग कंट्रोल, नियंत्रण खो देते हैं अपने आप पर, मतलब समय पर को नियंत्रित नहीं रखे, अपने आप को समय के अनुसार नहीं डाल सके, तो अपना नियंत्रण खो देते हैं। और क्या होता है, जीवन क्या हो जाता है, बोझिल हो जाता है, तनावग्रस्त हो जाता है, और फिर धीरे धीरे बहुत प्रकार की विसंगतियां शरीर के साथ साथ व्यवस्था में भी आने लगती है, उसकी झलक मिलनी शुरू हो जाती है। Poor quality of work, poor time management typically make the quality of your work suffer. For example, having to rush to complete tasks at the last minute usually compromise quality. कि 10 दिन में समाप्त करने के लिए कहा गया काम को, एक योजना आपको सौंपी गई कि 10 दिन में इस कार्य को समाप्त करना है, और आपने क्या किया, प्रथम 8 दिन को बिता दिए। प्रथम 8 दिन को आपने यूं ही बिता दिया कि अभी तो 10 दिन का समय है, और अंतिम 2 दिन का समय जब बचा, हड़बड़ में जैसे तैसे काम को पूरा किया। इससे क्या होगा, काम की गुणवत्ता उतनी अधिक नहीं होगी, काम उतना सही तरीके से संपादित आप नहीं कर पाएंगे। तो जो आपको 10 दिन का समय मिला था, 10 दिन में आप 10 तरह की एक्टिविटी करके दिखा सकते थे उस परियोजना को, 10 तरीके से कर सकते थे उस योजना को। अंत में जब 2 दिन हम लोग काम को करते हैं, 10 दिन के काम को 2 दिन में करना समाप्त करते हैं, तो एक्चुअली हम लोग उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता पर क्या करते हैं, समझौता करते हैं, कॉम्प्रोमाइज द क्वालिटी ऑफ टाइम मैनेजमेंट। कि टाइम आपको दिया गया 10 दिन का, और आपने उसे पूरा किया 2 दिनों में। बहुत से विद्यालयों में क्या देखा जाता है, कोर्स समाप्त होना है, 2 दिन में 2 लेसन, 3 लेसन, 4 लेसन बता दिए। ऐसी स्थिति में क्या होती है, उसकी क्वालिटी, वो गुणवत्ता नहीं रह जाती जैसी होनी चाहिए, क्योंकि कालांश का और काल का विभाजन किया गया उसे अध्याय के, उस टॉपिक के अनुसार। तो सही समय पर सही कार्य को करना, टाइम मैनेजमेंट के अनुसार काम को करना। जैसे अभी आप यहाँ बैठे हुए हैं, तो क्या काम कर रहे हैं, दूसरे कामों में यदि आप व्यस्त हैं तो दूसरे काम को कैसे करेंगे। आपकी गुणवत्ता यहाँ सीखने के लिए है कि प्रशिक्षण हो रहा है, इसमें सीखने के लिए आप आए, और यदि आप दूसरे कामों में व्यस्त हैं तो उन बातों को आप सीखने से वंचित रहेंगे कि समय की महत्ता क्या है।
कि आपने समय को हल्के में लिया? जिस काम को आपको कक्षा कक्ष के बाद एक कालांश में करना है, जो गैप का पीरियड है उसमें करना है, उसको आप यदि यहां संपादित करेंगे तो क्या होगा? गुणवत्ता में ह्रास होगा, क्वालिटी वो नहीं मिल पाएगी। तो हर जगह ये लागू होती है कि हड़बड़ में गड़बड़ होता है, कि जब हम लोग हड़बड़ी में कोई भी काम को करेंगे तो कुछ विसंगतियां आएगी। इट client of your employer cannot rely on you to complete tasks in a timely manner. Their expectations and expectations of you are adversely affected. If a client cannot rely on you to get something done on time, they will likely to take their business elsewhere. Then question arises, what is time management? आखिर टाइम मैनेजमेंट है क्या? इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट है क्या? तो समय के अनुसार उसके गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं करना और समय पर काम को पूरा करना, ये है इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट इज द प्रोडक्टिव यूज ऑफ योर टाइम, कि समय का सदुपयोग करना उसके गुणवत्ता को बरकरार रखते हुए। ये टाइम मैनेजमेंट है, allowing you to get everything you had planned done. It's organizing and planning your time between the tasks you have to complete. And this can include assignments, projects, studies, groups, or extra co-curricular activities. Proper time management requires you to shift from focusing on the activities to results. अभी हमने यहाँ एक वीडियो में देखा था कि कक्षा कक्ष में एक एक्सपेरिमेंट को दोहराया जाता है। एक खाली जार लाया जाता है, उसमें आधा पानी डाल दिया जाता है और पूछा जाता है, बताओ इसमें क्या है? कुछ बच्चे कहेंगे कि आधा भरा है, कुछ कहेंगे आधा खाली है। वास्तव में वो तो भरा हुआ पूरा है, आधा पानी से भरा है, आधा हवा से भरा है। फिर उसमें यदि कुछ पत्थर के टुकड़े डाले, फिर बच्चों से पूछा गया कि बताओ अब ये भरा है या खाली है? बच्चों ने कहा कि पूरा भर गया। फिर शिक्षक ने क्या किया कक्षा में एक्टिविटी में कि उसमें कुछ लिक्विड्स डाले, वो भी अंदर चला गया। फिर उसमें कुछ चीनी के सिरे को डाला, वो भी अंदर चला गया। फिर चीनी को चम्मच करके डाला, नमक को डाला, वो भी उसमें डिसॉल्व हो गया। अब उसने क्या किया, उसमें सैंड डाला, बालू को उठा के डाला, कुछ भाग उसका चला गया अंदर, फिर भी वो खाली हो गया। फिर बच्चों से पूछा गया कि बताओ ये खाली है कि भरा हुआ है? तो इस प्रकार की एक्टिविटी उनके मन के कंसेप्शन को क्लियर करेगी, इफेक्टिव बनाएगी। कक्षा कक्ष में जो सिखाया जाता है उसको इफेक्टिव एजुकेशन को बनाएगी। आपके एनईपी 2020 में भी इन्हीं एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में बताया गया कि फ्रॉम बिगिनिंग से आप हायर लेवल तक इसी चीज को आप दोहरा सकते हैं और आपको करना भी है। आने वाले समय में जो आपका शुरुआती बच्चे होंगे जो सीखने के लिए आएंगे, उनके लिए आपको तरह तरह की एक्टिविटीज करनी होगी कक्षा कक्ष में, ताकि वो बच्चे सीख सकें। क्योंकि उनके हाथों में किताब नहीं होगी, कापियां नहीं होगी, वो एक्टिविटी करके सीखेंगे और बताएंगे। इसलिए आपको उसके लिए भी तैयार रहना है कि टाइम मैनेजमेंट करते हुए उन बातों को सिखाना, ताकि वो रिजल्ट भी दे। केवल
डिस्कशन पर सीमित नहीं रहे, रिजल्ट भी वो दे। With good time management, you complete your task with minimum effort and make most of your time working smarter and not harder. Proper time management requires you to shift from focusing on activities to result. एक्टिविटी से कराते हुए रिजल्ट की ओर पहुंचना, अननोन से नॉन की ओर बढ़ना, तब इफेक्टिव टीचिंग है कि बच्चे आप अपना लेक्चर पूरा करके निकल गए और बच्चे मुंह देखते रह गए। एक कक्षा कक्ष में बहुत सा शोरगुल हो रहा है, टीचर प्रवेश किए और अपना व्याख्यान दे करके निकल गए लेक्चर मेथड से। बच्चे सीखे नहीं सीखे, जानने का उन्होंने प्रयास नहीं किया, तो ये सही समय का प्रबंधन नहीं कहलाएगा, नॉट टाइम मैनेजमेंट। यदि कक्षा कक्ष में प्रवेश किए, बच्चे अनुशासित भी हो गए और सिखा रहे हैं बच्चे को, कुछ बच्चे नहीं सीख रहे हैं, नींद मार रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? वैसी स्थिति में क्या होगा? जो बच्चे नींद मारेंगे उनके पास तो वो चीजें नहीं पहुंचेगी, वो नहीं सीखेंगे, तो उनके बारे में पता कैसे लगाएंगे? तो अपनी दृष्टि को चारों ओर दौड़ाना कि कौन से बच्चे सो रहे हैं, कौन से बच्चे झपकी ले रहे हैं, कौन दूसरे कार्यों में व्यस्त है, ये सही टाइम मैनेजमेंट है। क्या बेनिफिट्स होगा? बेनिफिट्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट, इसका क्या बेनिफिट होगा आपको जिंदगी में? गिवन द लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम यू हैव इन अ डे, आपके लिए 24 घंटा की जगह 48 घंटा का नहीं होगा दिन रात, आपके लिए 24 घंटा का 24 घंटा ही आपके हाथ में है, वो भी आपके हाथ में नहीं। आप रोकना चाहिए, रोक सकेंगे क्या? नहीं, तो मैनेज करना इसको। Given the limited amount of time you have in a day, you want to make the most of it. It is easy to get caught in a frenzy of activities and achieve less. Here are more reasons why managing your time in school is essential. It helps you achieve your goals faster. जो आपके जिंदगी भर की उम्मीदें हैं, कौन सी उम्मीदें हैं? कि बच्चे अच्छा करें, इसी पर आपकी भी खुशी है, उस माता पिता भी कुछ सोच करके आपके पास भेजे बच्चे को, वो भी यदि सीखते हैं, वो माता पिता भी खुश होंगे कि उनका जो टारगेट है जिंदगी में ये बने, अच्छा मनुष्य बने, अच्छी पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे, कुछ सीखे, विद्यालय जाकर कुछ सीखे। टू अचीव योर गोल्स फास्ट, और ऐसा टाइम मैनेजमेंट करके आप कर सकते हैं, इसको सक्सेसफुल कर सकते हैं, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट मेक्स यू मोर इफेक्टिव इंस्टेड ऑफ गेटिंग कॉट अप इन मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग, आप जब क्लास में हैं, कक्षा कक्ष में हैं, तो आप एक टाइम प्लान करके आए कि आज ये करना है कक्षा कक्ष में, तो उसमें बहुत से बच्चे हैं, बहुत तरह की मानसिक स्थिति है, सभी को कंट्रोल करना और फिर उसके आधार पर फिर अलग अलग बच्चों को अलग अलग तरीके से सिखाना। तो एक्टिविटी जब करेंगे तो सभी बच्चों का ध्यान एक्टिविटी पर रहेगा। जैसे विगत दिन भी बताए थे कि कलर मिक्सिंग के बारे में, जब जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं वो भी सीख जाते हैं। तो यदि हम लोग समय का प्रबंधन करें, टाइम मैनेजमेंट करें,
तो इफेक्टिव टीचिंग के लिए बहुत जरूरी है कि आपको 40 मिनट में 10 मिनट कक्षा व्यवस्था और बाद के 30 मिनट जो बचे उसमें पाठ को संपादित करना। पाठ को संपादित करने के बाद फिर बच्चे के बारे में देखना कि वो सीखे या अथवा नहीं, कि आपका टीचिंग कितना इफेक्टिव हुआ, इस चीज को जानने का प्रयास करना, उसी समय के दौरान करना है। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट मेक्स यू मोर इफेक्टिव इंस्टेड ऑफ गेटिंग caught up in the multitasking. You focus on activity at a time for a specific duration. This way, you give it your best, which results in your achieving your goals faster. For instance, if you want to improve your grades in a specific subject at the Global Indian International School, slotting in some extra time to work on it will help you raise your grades faster. तो हम लोग विभिन्न स्कूलों में जब विजिट करते हैं तो वहां की समय प्रबंधन को देखते हैं कि कहाँ क्या क्या एक्टिविटीज होती है, कैसे होती है, और अपने को उसके अनुरूप ढालने का प्रयास करते हैं। इन हाउस प्रशिक्षण हो या बाहर जाके आप प्रशिक्षित होते हैं, प्रशिक्षण का यही अर्थ है कि आप विभिन्न एक्टिविटी से अवगत हों और अपने टाइम को मैनेज कर सकें, जिससे क्या हो, वो अचीवमेंट आपका, आप अपने गोल्स को अचीव कर सकें टाइम समय पर। इट हेल्प्स यू prioritize your work when creating a timetable. You prioritize essential tasks that require immediate action. For instance, getting your assignments done comes before a study session or a study group. With proper time management, you can slot in time to work on your project before going for a study group. This means that you can complete essential tasks on time because you can plan and set aside time to work on them. You get more done in less time. आपके पास काम करने के लिए बहुत है लेकिन समय सीमित है। कक्षा कक्ष में करने के लिए बहुत है, लेकिन आपके पास केवल 30 मिनट का समय, 40 मिनट का समय ही है। 10 मिनट कक्षा की व्यवस्था को संभालना और 30 मिनट में पाठ को संपादित करना और जांचना कि आपने कितना सिखाया, आपका टीचिंग कितना इफेक्टिव हुआ, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कितना इफेक्टिव हुआ, इसको जांचना उसी समय अंतराल में। तो काम तो काफी बड़ा है लेकिन समय तो आपके पास सीमित ही है। एलोकेटिंग a specific task at its own time help you focus on it more. By sticking to this time plan, you have a better chance to tackling the task than getting to it with no predefined time allocated to it. Take doing assignments or working on a project. If you don't dedicate time to work on them, you will likely forget to complete them. Having a proper schedule allows you to allocate enough time to each task to hit your deadlines in time. तो समय के आधार पर काम को समाप्त करना, कि आप समय को बांध तो नहीं सकते लेकिन उसके अनुसार काम करके आप उसको समय पर पूरा कर सकते हैं।
reduce stress. You can quickly become stressed if you have a long list of things to do and not enough time to get them done. Proper time management enables you to prioritize tasks and tackling them first. This is the main motive of time management. Thank you.